of these guys announced as a scammer on the news, which I'll show to him. But first I wanted to see how they scam people, and luckily 4 scammers did not yet tape off their webcam, and so I can see exactly how they rip people off. Please bear with me for a moment so that I can go ahead Yes, and yes. check each and every problem for you. Oh, I think he sees it. I think he sees the light. He's look. Oh, fuck it. Well, I don't like the whole setting. What the hell? What's my record? Where are they recording? Charge! Reload! Hit. Hep. Uh, 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 uh.
This is so good. What the hell, man? The hell? I like the. Oh, the song, bro. The song. Oh, the hell, man. I wanna listen to the song. Okay. Oh, the song, bro. The song. I'm crazy.
Hmm. Bro, what is this song?
Bro, ये गाना क्यों बंद हुआ था? इसको बनाने के लिए 3 चाहिए। क्रिटिकल को बना लूंगा एक बाद में। वहाँ पे दूसरे ट्रेन्स भी आते हैं। What the hell? किसका ट्रेन है? और नहीं, मैं चढ़ नहीं सकता यार। वाह भाई, ऐसे ट्रेन आते रहेगा क्या? आता जाता रहेगा भाई। क्या बनाया भाई, सिस्टम बनाया यार। भाई कहाँ ले जा रही है ट्रेन? ट्रेन ऑपरेटर भी है। ओके चलो, मैं इनके साथ ट्रेवल करता हूँ, वापस आ जाऊंगा मैं। ये क्या है? ये क्या सब जीव जंतु है यार? What the fuck? Ladies and gentlemen, for your safety, please avoid running into rushing kill if you please stay. Okay. Alright, okay. अरे नहीं। Whoa. We are now approaching Snezhnegrad. Please remember to take your personal belongings. If you accidentally leave something behind, you might have to go all the way to the Transportation Bureau headquarters in Novokitezh to claim it. लोग उतरेंगे क्या यार? ऐसा ऐसा एनिमेशन बनाया होगा क्या उतरने का? तो नहीं है बट
उनको उतर नहीं रहा बनाया नहीं उन्होंने. How disappointing. Wow. That's a kid. It's an actual toddler, bro. The hell? Oh, the preview shoot and I like food. We don't have enough. Okay, तो पहले artifacts farm कर लेता हूँ उसके कुछ और करूँगा. For you, my lady. Need artifacts for you. You may discover some rare during the adventure. Early to cook new dishes by reading recipes and near theory. Best retirement fights in UFC history. After having one of the best careers in the UFC, Dustin Poirier was set to fight Max Holloway for the BMF belt, and it was destined to be a war due to how much was on the line. This was Max's last chance to get a win over Dustin, and it was Dustin's last shot at a UFC title. In round one, both started cautious, and it was Max who upped the pace, and Max somehow dropped Dustin with a right where the fight could have ended there, but Dustin managed to get up and continued fighting. Throughout the fight, Max continued to outstrike Dustin and had him hurt many times, but Dustin remained strong and also fired back at Max. It was clear Max was winning the rounds, but Dustin still had his moments and showed the toughness of a UFC veteran. In round 5, both guys went crazy. Stop and the right final there. seconds was the cherry on top, showing how great these guys were. But Max had clearly outstruck Justin and ended up winning by unanimous decision. But fans ended up cheering for Dustin as he gave one. Drop your weapons! Light it up! Into the shadows. Stop right there! Justice will prevail! Step aside! On my mark! Loaded. Hunt them down. Try and stop me! Incinerate! Final warning!
Quick as a flash. Step aside. Let's move. Burn it down. Into the shadows. Light of the blazing sun! Drop your weapons! Form first! On my mark! Rise with the sun! Loaded. Where evil lurks, shoot on sight! Last one. Level up this thing. Okay. Oh shit, he's Stop gonna right die. there! You asked for it! Start the clock! Light it up! Enough! Harder! Let's move! Harder! 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 Testify. Ready. This is a new sight for me. A rather bleak one, I must say. Where's my train though? Where's my train? There's my train. No, where is my train though? Where's my train? Oh, there's my train. Oh, what the hell? I can't craft.
Let me back just a second. I need something to craft. He was whipping up anger in a kettle, festering hatred like steam out the ears. Oh, hello. Yeah. Big Sir fan big भाई shout out live stream. Shout out please. Oh भाई shout out चाहिए भाई. Oh shit, इसको भगा दिया मैंने गलती से. Rev the engines! भाई गाना ये गाना है यार. Shit, this is a good ass view. Whoa. What up, bro? What the fuck? They really had to build the Shut up, Pangman. I'm trying to raise him up. So, what up, kid? You wanna avoid you wanna looking fuck? down if you're afraid of heights. No, it's not
Dad. I'm the fire goddess. Just pray I'm that we don't have yet another the- accident. Shut up, Paimon, I'm trying to reason. Yeah. Shut your mouth, you fucking filthy animal. So, by the way, I'm the fire goddess. You know, I'm. That mountain is Shut the fuck up, bro. reminds Paimon of Dragonspine. They say this mountain's the domain of the Snegovic Lord. Snegovica? Snegovic retreated there to Snegova? avoid exclusion, so it's a pretty mysterious place. Okay. You hear all kinds of stories. Whatever you say, Oni-chan. Residents of the nearby town of Svietlolaidovka steer clear of the summit, and they make a living off of harvesting prime ice. So I was saying, you know, I'm Look, pretty Snezhnograd's just up ahead. shit. It was a good trip. I couldn't reason it. It was a good trip. I enjoyed it. You were traveling with me. Here we are. Wow. It's built for maximum efficiency, but yes, transferring trains here can be a little tiring. In the future, you can use this train station to travel anywhere you want in Snezhnaya. For now, though, come with me. Let's get Paimon checked out. This way. There's a lift car that goes straight to Sapoliarny. Look! They have really funny-looking hats. And those ones are about the same height as Paimon. But it looks like they can't fly. Those would be Volkudlak and Domovoy. You'll also see the winged Vila and the snowborn Snegovic amongst others. No wonder. We'd heard that Snezhnaya used to be the realm of the Fae. Paimon can really see it now. We got the lift to all ourselves. What the hell? Can I look outside? I don't look outside. Pretty, not pretty at To the all. left is the market of Zolny. They sell everything there. You can often find some nifty little trinkets. To the right, you'll see the Korolievsky Theater in the distance. Look at that! Incredible! Where's the statue? There. Wow. It's big. There's some. Bro, how big is this fucking thing, bro? Okay. Wow! Snezhnograd is stunning! Seeing it with our own eyes makes all the trouble we went through to get here worth it! I found it pretty stunning when I first came here too. But I soon found out that stunningly beautiful means stunningly expensive. The prices here are crazy. I'm just a small-time hunter, so Zolny is where I spend most of my time. This way will take us to Podvorier Restaurant. They offer food and lodging there, so you can get settled in while I fetch the doctor. Is that gonna be
Yeah, I mean, there are places to stay in Zolny, but I highly doubt they'd meet your standards. Most of the stoves are out of crystal, the windows are drafty, and at night, four-legged roommates come out to play, sharpening their claws on the roof beams and floorboards. Yep, no way. Not a chance Paimon's staying anywhere like that. Maybe we can split the cost of the room between us? Paimon still has some savings left. Fine then. It's your treat. Paimon will save her money for buying a nice little cake. Don't worry, you'll get some too. I'm glad to see you've perked up. If you find yourselves in the mood for some sightseeing later, there's a few places around here worth seeing. This way leads to Zapoliarny Palace, which serves as the Tsaritsa's audience chamber and also her personal quarters. The adjacent block is kind of a city in its own right. That's Glupov, the headquarters of the Fatui. Inside, there's a munitions factory known as the Armory Palace, producing a constant supply of all kinds of equipment for the Fatui. A lot of important research happens there too. And over there is the Snezhnograd Vecha, where all the big shots meet regularly to make policy decisions. These places are best admired from a distance. I'm sure I don't need to explain why. Yeah, they probably have super strict security. We're not looking for trouble right now. The downtown area is near the center of Zapoliarny. That's where you'll find the restaurants, bookstores, and gift shops. Another place of interest is the Northland Bank, which is over this way. Oh, and I'm sure you'll want to make contact with the Adventurers Guild at some point, right? That's right here. Ooh, speaking of adventuring, we use alchemy quite a lot. Do you know where we can find a crafting bench? No one practices alchemy at Snezhnograd, I'm afraid. Apparently there's some historical reason for it. Oh, we'll just have to use the one on the train then. Kinda inconvenient. Wait, how come there's one on the train if that's Snezhnayan too? Yeah, I don't know. Not my area of expertise. Still, I wouldn't say the absence of alchemy makes life here Anyway... Finally, there's Zolny in that direction. It's mostly residential buildings and factories, but there's a few shops too. That's about it. You guys go ahead and get checked in. Sounds good. Thanks for all the recommendations. Podvorye restaurant is right this way. Catherine. Let's meet Catherine first. Welcome to Snezhnaya, Raiden Sword. Adventuring delicious. Your service. No. So Snezhnaya, its weather is terrifying. Given the circumstances, it would be highly impractical to require adventure to return all the way back to the hill just to return all commissions. So in ice, that is where the Premium Ice Commission comes in. With the device, you can return your commission from the field instead of all the way back to us. As for your question, yes, rest assured there will be a daily as the guild will also arrange to have it sent to you through various means. Don't worry about it. The adventure guild will be sure that you can
down to the rewards, all ventures and commissions. That's whether you're hot or best, within heat, within hot or nations for ice, Shizunaya. The guild will always be behind adventures. Enjoy your venture resort at the Strass. Add Astra. क्यों? Thank you for coming. अरे कैश है ना, कैश लेके आना, कैश लेके आ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, खत्म हो जाएगा शुरू करूँगा। पापा का फोन कर। मेरे पास नहीं है। New. Okay. Do it later. First, we're gonna do the. Bro, what the fuck is this? What the fuck is this, bro? And what are you, bro? Fucking fairy? Fairy. Nearby. Previous work on nearby, bhai. One pull won't hurt. One more pull won't hurt. I'm retarded, bro. I'm retarded. What the hell? Come on, 5-star. What am I doing? Instead of finding. I'm around, like, I'm near PT, bro. There should be 5-star. Come on. Fucking asshole. To the heavens. God should broaden their horizons in the world below. Pablo. क्या तुझे नहीं खाना है क्या? कल स्कूल जाएगा कि नहीं? 200 क्यों दिया? वो मुझे खुचरा चाहिए था। ठीक है भाईगा। Looks like you get what you pay for, huh? Paimon likes this room a lot. Yeah, much better now that we're out of the cold. Oh, thanks for taking such good care of Paimon. Honestly, she feels kind of bad for throwing a wrench in the works. If this were anywhere else, we'd be out investigating and adventuring by now. But instead, we're stuck here waiting for a doctor. You're right. No need
need to push ourselves too hard for no reason. A lot happened on our way into the city. Let's review what we've learned so far and try to figure out what to do next. Obviously, the million more question is, what is this Saritsa planning? Everything else leads back to that. Sure was. And so far, we've learned that in addition to the 7 Gnosis, her plan also requires a ton of energy. But we won't get to see her anytime soon. Alosha said that she went east to fight that big monster. It must be a pretty powerful one if it can blanket the whole of Snezhnaya in a snowstorm this awful. To be honest, what we're really lacking right now is information. The kind of information that only the higher-ups in the government would know. Not word-on-the-street type of info. Paimon can think of a few people who might be able to help us. But... Right! And when we left Nogcry, Sandrone specifically left a message reminding us which side we're on. So... it's unlikely they'd tell us anything confidential about the Saritsa's grand plan. Yeah, fair point. Besides, that Gloopov place is right nearby. We've got nothing to lose, so it'll be a waste not to go. There's gotta be someone there willing to talk to us, right? Maybe Arlecchino or Sandrone? But it's unlikely we could sweet-talk Arlecchino, let alone Sandrone. Yeah, the last time was all the way back in Fontaine, right? Too bad we missed him in Nogcry. Apparently, he came to help out. Hello. Is there a traveler and Paimon in there? That's Alosha! Come in! Hello, I'm Dr. Luneva. Alosha mentioned that one of you is feeling a little under the weather. I see. So you're my patient today, yes? Good question. Paimon's not too sure either, but she's definitely not the same kind of fae as the ones we saw at the train station. Is that... Not exactly. It's just, I'm used to treating human patients. Fae tend to be far more resilient than even the healthiest and most long-lived of humans. But don't worry, I do have some experience treating fae. I've even diagnosed plenty of cats and dogs in my time. Safe to say, I have a fairly eclectic range of expertise. It'll be fine. Paimon's basically the same as a human. Right? We're no different when it comes down to it, are we? That's just because Paimon knows how to eat. Now, please take a seat. Okay, vital signs are good. Test results are all within normal ranges. I don't think it's anything serious. More than likely, you've just caught a cold. I can give you some medicine to tide you over, but as long as you rest properly for the next couple of days, you should feel better. Make sure to keep an eye on your temperature, though. If you find yourself with a persistent low-grade fever, or if your symptoms don't improve, just contact me again. Sounds like there's no cause for alarm. Thank you, Doctor. You're very welcome. Just doing my job. I'll leave. Take care. You heard the doctor. Best you rest up here for a couple days. No sightseeing for the time being. All right, then. Guess we've got no choice. Let's just treat it as a short vacation. I have to get back to it. If you need anything else from the doctor or me, go to the Hunter Trade Station in Zolny. The boss there knows how to reach me. Hey, no big deal. You saved my life in the Shadow Realm. This is the least I could do. See you around. All right. Time to find Child and see what he can tell me. The effects are good.
bottles of fire water, and then go out. Vanilla water. You mean? Exploration and trials. Report anything unusual to me. Adventuring is right up my alley. Try and stop me! Rev the engines! Wow. क्या करना था समझा नहीं यार. Hold on. Please display your invitation letter or permit. Glupov does not accept meeting requests without a prior appointment. You'll have to apply per the advertised booking process and wait until your invitation letter is issued. Might I ask who you're hoping to visit? Another one who thinks the rules don't apply to them. I don't understand why people think they can just talk their way in here. You don't just show up and land a meeting with a harbinger. But I have to go through the motions for protocol's sake. Honestly, it's such a waste of time asking when I already know what the answer's gonna be. Wait a moment. I'll pass on your message. If Child is unavailable, you'll have to go through the proper procedure. Lord Child is a busy man. He's probably not in Glupov at present. If I were you, I'd cut your losses. No point waiting any longer. Even if you two are old friends as you claim, please understand that the Fatui Harbingers are often busy with their official duties. Next time, stick to the rules. You'll make life easier for both of us, Greetings, Lady Marionette. I'll take care of our guest here. It's her first time in Snezhnaya, so it's no surprise that she doesn't know the rules yet. I trust no choice words have been exchanged. No misunderstandings I should be aware of. No, Lady Marionette. No incidents to report. Whew, that was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Wait, where's Paimon? Under the weather? That's hard to imagine. She's always buzzing with energy. I take it she's still adapting to the climate. Happens to a lot of people. It's even colder here than in Nodcry.
Has she seen a doctor? I can get you one if you need. All right then. Well, let me know if you run into any other problems. Why else? I was just about to sit down for some much-needed tea time when I heard that an old friend of Tartaglia's had shown up outside. No appointment, nothing. And, as obnoxious as it may be to show up uninvited at Glupov, I couldn't help but take pity on the poor soul who was waiting outside in vain. So I had no choice but to abandon my freshly brewed piping hot tea and come to see this mystery guest for myself. Well, I felt our time working together in Nodcry warranted some courtesy. I couldn't exactly let you freeze to death out here in the wind. Unfortunately, I can't invite you inside either. The rules of Glupov wouldn't allow it, and as a harbinger, I have to lead by example. On the plus side, Snezhnograd actually has some class, unlike Nasha Town. Torchlight Books has a very nice selection of teas and cakes, so we can catch up there. Your treat, of course. Because I already wasted one perfectly good cup of tea today. That's why. And then, right, if you have no arguments in business here, please pass through quickly. Not, and then, but if you have any problems such as things, damage, roads, fell rocks, rain, please do come and tell us. We will notify the personnel to make sure. Oh, bro, better than. Why you look better. हमारे यहाँ के लो. Wait, what? I hope you look, bro. What the fuck, bro? Snezhnaya better than Assam, bro. Better than India. Try and stop me! Into the shadows. Full throttle! Try and stop me! I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia, per se. You just want information, right? Wanna take a guess? Of course you'd say that. Ah. You shouldn't underestimate Counselor Tartaglia, you know. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnograd Vecha by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. They'll be discussing yet another extension to Project Stuja. It's basically all anyone cares about in the Vecha these days. Tartaglia
consular. Sorry, it's just a little hard to imagine. It doesn't actually strikes me as a pen. Yeah, he's more of the shoot first, ask questions later sort, isn't he? It all started with a very detailed letter that Capitano left for the jester, Piero, before leaving for Natlan. In that letter, he detailed the future arrangements for his subordinates. All of his key people were reassigned to Tartaglia. I guess he'd already prepared to leave us for good all the way back then. But Piero didn't reveal the contents of the letter until the events in Natlan had concluded. That was his reaction, too. Why me? With a bewildered look on his face. He'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his thoughts to himself and barely spoke to him the whole time they'd known each other. But he occasionally brought Tartaglia along to my tea parties back in the day. So to the rest of us, it was clear that Capitano had quite a lot of respect for his young comrade. By the rest of us, I mean my tea party regulars. Arlecchino, Rosaline, and... actually, not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liu-S situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. It's not really my place to talk about it, though. You can ask Tartaglia about it sometime. Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along. Right up until Piero revealed the letter he'd left behind. Capitano believed that despite Tartaglia's immaturity, he showed great potential. Plus, he possessed a kind of purity rarely seen among members of the Fatui. That makes sense. Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why Capitano chose Tartaglia to assume command of his troops. He knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. With the ones who stood to benefit the most being the rooster Pulcinella and Regrator Pantalone. Once they divided Capitano's troops between them, they'd be more powerful than ever. No one would be able to stop them. So, you can see why Capitano chose to hand that letter to Piero, right? Exactly. Piero also needed to back a harbinger as soon as possible. And all things considered, Tartaglia was the best choice. Even though Tartaglia has had the support of Northland Bank for a long time, he and Pantalone are ultimately not cut from the same cloth. I'd say Capitano made a good judgment call. Anyone else caught in this situation would probably feel like they'd been hung out to dry. His best course of action will be to distance himself from any shady business, while still maintaining friendly relations with Pantalone, but seeking Pulcinella's support at the same time. What's the point in having a tea party if you don't spill a little tea? Besides, none of this is confidential anyway. It's a tea party if you guys have ice cream, bro. The They'll fuck give is you that? all the lurid details. And then, bro, Snezhna is cool as fuck and you're guys eating ice cream. The Fuck is wrong with you both? Strife, whether open or unspoken, it plays out for all to see in that one little room. Having a voice in the Vecchia is the only way to steer policies in your favor. So, every person in that room represents a particular interest group. Pantalone, for instance, represents the financial sector, and Tartaglia represents the Fatui soldiers. Personally, I have no interest in political jousting, but since I have a number of engineers and researchers under my command, I have to make their voices heard. Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vecchia. He represents politics itself. Everything involves him, so nothing can bypass him. Any issue that comes up, he knows how to mediate. That's what the Tsaritsa values most about him. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are, but also powerless to change it.
A complex web of interests connects all parties involved. And the Sarisa sitting at the top adds another layer of complexity. It must be nearly impossible to come up with a perfect solution. All right, I'm done carrying this conversation. Time for you to answer a question of mine. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not me? Huh? Jealous? As if. Wait. Oh, I think I know what it is. Columbina passed on my message to you before you left Not Cry, right? I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? Because you took that to heart? You... fair enough. It's not your fault. I blame all these politicians I've been hanging around with lately. Always beating about the bush when they talk. I guess it must have rubbed off on me. Anyway, just ask for my help next time, okay? Little things like this are no problem. Lady Marionette. What now? Can't you see I'm on my break? Whatever it is, just leave it on my desk. I'll look at it later. Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid it's an emergency. Isn't it always? I've told you before, fixing the tracks and transporting ice blocks does not constitute an emergency. The equipment in Svietlo-Lidovka is in urgent need of maintenance. With how the weather's been recently, we suspect that the cause is a buildup of snow, exceeding the maximum weight limit. The supports on one of the machines broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the ice miners trapped in a nearby ice cave. Luckily, Odette's team was nearby and launched a rescue operation, but we're still facing a severe manpower shortage for both the rescue and engineering teams. I guess that's it then. Our tea party will have to end here. Do you actually want to come with, or are... And honestly, I'd rather have your help than anyone else's. Between your skills and experience, you'd be reliable help. Then let's go. You, take 2 people to Podvorier restaurant. Find her room and watch it like a hawk until we get back. If anything happens to Paimon, you'll be answering to me. Yes, Lady Marionette. Okay. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Train. Why is my train there, bro? What the fuck is my train doing there? Bro, why are you there? Oh. Come. My friend says, come, bro. He says, come. High kilometer temperature. Fuck all of these, bro. Pyro damage, no need. Dangerous, fuck off. Nah. Nah. Kinda? I don't know. There's a horse shit, bro. What the hell?
Just defense, just useful. I don't know. HP 9. Bro, who the fuck needs physical damage at this day and age? What the fuck, like, they should fucking remove physical damage from the game. And we got dog. We got dog water. It's the last set, I think. Hello? Except quest. हेलो हर्ष कैसे है? ये quest क्या है भाई? Except quest. Play Genshin for 15 minutes and win an in-game reward bundle. ओए खेलता फिर. कैसे क्या करना है इसमें? पता नहीं 15 मिनट खेलने को बोल रहा है मेरे को तो. 15 मिनट बस गेंशिन पे खेलना है. अपडेट है क्या? हाँ किया तुमने अपडेट नहीं किया ना? नहीं किया. भाई ट्रेन में ना आया भाई, मैं ट्रेन चल रहा था लिटरली भाई, ट्रेन में चढ़ा हुआ था. अच्छा कितना बड़ा है अभी? पता नहीं यार. एक घंटा दिखा रहा है मेरे को. अच्छा 7 GB है. छोटा ही है. छोटा ही है. वो लोग नहीं तो स्लो है. 7 GB में कैसे हो के इतना बड़ा एरिया को? क्या दिखा तो मेरे को स्क्रीन शेयर कर. FPS आ गया भाई, गेंशिन FPS भाई. अरे मैं वो कैसे शेयर करूँ? मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इधर. ओ हाँ यार डिस्कॉर्ड में ये लो, ये ले. ये हाँ क्या हुआ? हेलो. हाँ लगा FPS है. देखा तो शूट कैसे करते? शूटिंग रेंज दिखा सकता हूँ, वो बाद में दिखाऊंगा तुमको. वो अलग मतलब जब एक्सप्लोर कर रहे हो ना, एक्सप्लोर करते हुए कुछ वो आता है, डंजन आता है, वो डंजन में कर सकते हो तुम. नए कैरेक्टर की कौन सा है वैसे? ये और ये FPS है क्या? 30 है. अच्छा है तो क्या हुआ? भाई तेरा एम अच्छा है यार. मुझे भी सिखा दे. एपेक्स भाई, नेक्स्ट चलो एपेक्स खेलो. ये ट्रेनिंग दे दे यार. मेरे को वैसा शूट करना है. नहीं हो पाएगा भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा. कहाँ है बबुआ? कहाँ नहीं ना है हो पाएगा हमसे. तुमसे ना हो पाएगा क्या? कौन सा मूवी का था ये? ये उसका था वासीपुर का. गैंग्स ऑफ वासेपुर. गैंग्स ऑफ वासीपुर. मैं जब बोल रहा था ना अभी उसके लिए पुल करना है तुम, ये आर्ले चीनो के लिए. ये रे दिखा तो अर्ली चीनो दिखा दे भाई मेरे को. आर्ले चीनो, इसका पता है, इसको फादर इसके नाम इसको सब लोग फादर बुलाते हैं, पता है? मतलब लड़की बट इसको सब लोग फादर बुलाते हैं. फादर भाई पैक करती होगी सबको भाई. भाई कूल नहीं है तब से रेडिंग कूल नहीं था. इसका ऑल्ट दिखा तो. अल्टीमेट अल्टीमेट. इतना कूल नहीं है. कूल बट मून वाले का कूल था. Everybody stand back! Enhanced animal mod... Overruled! 14 देखो डैमेज देखो भाई, 14,000 40,000 भाई, क्या डैमेज है भाई. तो है भाई. Rain cutter! Transfixed! भाई ये इसको पुल कर लो ना तो तुम्हें बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम सबको मार पाओगे. बहुत डैमेज करती है ये.
इसको वो करना है, इसको वो करना है, क्या बोलते हैं। मैं वैसे मेरे पास है अभी 5 वो है, मैं कर सकता हूँ, करो क्या। मुझे चाहिए तो नहीं पड़ी यार, ये कैरेक्टर नहीं चाहिए मुझे। कर यार, मिल जाएगा। मिल जाएगा पर चाहिए नहीं तूने मुझे। तो मेरे को रेडन पुल करने नहीं दिया। वो तो रेडिन अभी अच्छा नहीं है तो। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? हाँ वो भी। हाँ भाई, अरे मतलब रियल में मेटा मेटा भाई, मेटा भाई। मेटा फिर तो छोड़ भाई। तुम्हें ट्रेन चला के दिखाऊं। ट्रेन चला। हम लोग जाएंगे, कहाँ जाए हम लोग, किधर जाए। इधर नहीं गया कभी मैं। स्नो ग्रैथ। ये मेरा पर्सनल ट्रेन है, इसमें मतलब कोई है नहीं, बट वो एनपीसी वाला ट्रेन भी होता है जिसमें एनपीसी लोग बैठा हुआ होता है। हेलो। बैग मार रहा है। आज बारिश होता क्या इधर इस साइड? पता नहीं। इस साल को कि तुमने हमारी तरफ हुआ था क्या। बस सुना है बारिश हुआ था। और चढ़ सकते थे। उस साइड नहीं गिरा क्या अपना? क्या बोलते हैं, तुम उस तरफ नहीं गिरा क्या? ओह शिट। हाँ चढ़ सकता हो तो। चढ़ सकता है। मुझे चढ़ने नहीं देगा ऊपर। ठीक है। टाइम लगेगा, आज नहीं हो पाएगा मेरा। है। तुम मिस्टर बीस्ट को जानते हैं? हाँ मिस्टर ब्रेस्ट जानता हो तो। मिस्टर ब्रेस्ट क्या हुआ मिस्टर ब्रेस्ट को, क्या क्या उसने। हाँ हेलो अमन, क्या क्या उसने। हाँ भाई। क्या क्या उसने। वो कुछ नहीं। वैसे बाय द वे मैं स्ट्रीम में हूँ। हाँ मेरा नाम हर्ष देगा है, मेरे को मधु भी बुलाते हैं। नहीं, ये एक गेम का नाम सुना था, गेम चेकआउट करना, स्ट्रीम पे है तो। क्या गेम का नाम है गूनर स्टूडियो। हाँ हाँ क्या स्टूडियो, गूनर स्टूडियो। क्या होता है उसमें। ये तो गोनी मटेरियल बना सकते हैं। Loaded. Final warning. Wrath from the skies. Incinerate. कितने रुपए का चल रहा? $20 $20। कितने बोल यार? 1000 रुपये। 200 300 मान ले। तो अच्छा है यार, कम ही है। तो अपना गोनिंग मटेरियल बनाएगा कभी? फनी नहीं लगता क्या? तो अपना गोनिंग मटेरियल बना दे। बनाऊंगा पर मैं आर्ट सीख के बनाऊंगा, लाइक सीख लूंगा कैसे बनाते हैं उसके बाद। नहीं, तू जब बनाएगा ना तो पैशन जाएगा ना उसके अंदर, तो
तो हाँ अलग से फील करेगा उसको लेके, हाँ। शायद वो बनेगा नहीं। अरे तो वो मैं अपने लिए वो थोड़ी ना बनाऊंगा, वो मैं दूसरों के लिए बनाऊंगा ना, वो दूसरे लोग देख के गून करेंगे उसको। अच्छा वो भी है। मैं मेरे लिए आर्ट आर्ट जैसा हो गया, बट लाइक दूसरे लोगों के लिए वो हो गया, गूनिंग हो गया। समझा बहुआ? समझे का नहीं? हाँ समझे हम। मेरा मेरा ट्रेन का आगे चला गया यार। ये ऑर्लिचिनो प्लस ओडीटी, ओडेटे। ओ यार नोटेड। ये तो टट्टी आया है। वो लोग मेरे को वो पसंद आई थी, वो मून वाली। नाम मून क्या था वाली? उसका? मून वाली? ओ हाँ इससे पहले जो थी। कोलंबीना। हाँ उसका ऑल्ट अच्छा था, कूल कूल था अल्टीमेट। और डीपीएस नहीं है ना, और कुछ डैमेज नहीं कर पाता तुम उससे। यू हैव ए न्यू वो तो है। मैसेज फ्रॉम आई ग्रेंशन। क्या बोलते हैं तुम लोग एक साथ नहीं खेलते क्या तो वो शुभम है? हाँ खेलते थे, वो अभी नहीं खेल रहा गेंशिन। क्या खेलते हैं वो फिर? और उसने खेलना बंद कर दिया था, अभी शायद खेल रहा होगा वापस, पूछ सकते हो उसको। वो क्या बोलूं, सिंगल प्लेयर गेम है ना, इतना होता नहीं है। देख बात तो हम सही है बे, मैं हाँ, बहुत चीज एक्टिवेट नहीं कर पाया था तेरे कारण से। हम्म। और इतना हार्ड भी नहीं है, पहले हार्ड था तो हम लोग खेलते थे एक साथ, अभी मतलब उतना हार्ड भी नहीं है करने में। फिंगर क्रॉस। छी। क्या फिंगर क्रॉस जो इवन? ओए पुस्तक मिल गया। पुस्तक। और कुछ नहीं मिला यार। बहुत अच्छा किस्मत है बे, पुस्तक ही मिल रहे थे, पुस्तक और तलवार। पुस्तक और तलवार? ऐसे ही होता है क्या? नहीं, वो 10 वो है ना, गारंटीड है। 10 पुल के बाद मुझे, 10 के बाद? 10 के बाद मुझे 4 स्टार मिलेगा। और 60 के बाद 60 के बाद 5 स्टार मिलेगा, 60 पुल्स के बाद, 60 या मेरे को 70। 5 स्टार आज तक नहीं मिला जिंदगी में। मिल जाएगा, तुम सामने ही हो 5 स्टार के। हार्डली चीनो को मिल जाए पहला 5 स्टार, वो भी काफी है। हम्म। या फिर तुम 50-50 हार जाओगे और तुम्हें लाइक कुछ और ही मिल जाएगा। क्या मिल सकता है? वो है क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड बैनर कैरेक्टर बोलते हैं। दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड बैनर कैरेक्टर बोलते हैं जो लाइक तुम हारने के बाद मिलता है, जैसे कचिंग, मोना, चीची, ये सब में से एक मिलेगा। कचिंग मेरा फेवरेट था यार, कचिंग। कचिंग क्या मेन था, मैं कचिंग मेन भाई। क्यों क्यों इसके पास कौन सा एबिलिटी है? वो इसके पास वो है, वो जो वो है ना, वो नारुतो का पापा के पास जो एबिलिटी है। अच्छा वो तो कूल है फिर। हाँ बट फ्रैंक राजिन ना? हाँ हाँ, फ्लाइंग पता नहीं, जो भी समथिंग। वो अपना वो नाइफ फेंकता है और नाइफ के पास टेलीपोर्ट करता है ना, है कुनाई फेंकता है अपना, सॉरी। हम्म। हाँ वो वही एबिलिटी है ये कचिंग के पास। अरे खंजर फेंकते हैं, जो भी बोलना बोल, सेम ही तो चीज वो है। यहाँ खंजर फेंकता है, तो वो वही एबिलिटी है इसके पास। ये भी काफी है फिर। Ad Astra Episos. वो स्पीड स्पीड में वो करना अच्छा लगता है। तो मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर भी टेलीपोर्ट कर पाऊंगा क्या? हाँ वो वही कैरेक्टर खेलता फिर होगा तो अभी। वो टेरेन मैपिंग के लिए अच्छा ही है। हम्म। नहीं, उससे भी कई गुना अच्छे अच्छे कैरेक्टर है ना अभी, इसलिए वो मतलब ऑफ मेटा है वो, और वो इतना डैमेज भी नहीं करती वो। डैमेज के हिसाब से नहीं, ऐसा एक्सप्लोरेशन के हिसाब से ये कैरेक्टर तो अच्छा है सुनने में। हाँ। और तेरी योला भी, जो वो पानी को वो। अच्छा हाँ, ये भी है, ये भी है वो स्टैंडर्ड बैनर में, इसका नाम है दया। ये भी मेरा अच्छी लगती है मुझे। ये कौन सा 5 स्टार या 4 स्टार है? 5 स्टार। क्यों 4 स्टार जैसे लगती है क्या? डिजाइन अच्छा नहीं लगा? नहीं अलग है थोड़ा। वहाँ से बढ़िया है। ये डेजर्ट एरिया से है, मतलब वो थोड़ा वो साउथ, हाँ फरी लाइक हो गया। अरेबिक टाइप का। अरे यार फरी भाई क्यों लाते हो बीच में? एक्चुअली ये नकली है, तो इसका असली कान है, ये देखो, इसने बस ये वो लगा के रखा है।
क्या बोलते हैं इसे? समझ गया ना, ऑर्नामेंट भाई। ये कॉस्प्लेयर है मतलब सब। टॉमबॉय कॉस्प्लेयर है भाई, टॉमबॉय। Something's come up. क्या टीम बनाऊं इसका? ओवरलेट बनाता हूँ। Archon reporting for battle. Armed and ready. कितने साल से खेल रहा है और उसके पास कितने फर्स्ट शॉट है? हाँ? I will lead us to victory. कितने साल से खेल रहा है और कितना फर्स्ट शॉट है? जिसका बैकग्राउंड गोल्डन है वो सब 5 स्टार है। जिसका गोल्डन बैकग्राउंड है ना। नहीं है तेरे पास तो। हाँ? नहीं, सारा नहीं है 1 और 2 3 4 5 ज्यादा। ज्यादा है। और शुभम के पास और है भाई, शुभम के इसका भाड़ा पर है। कितने है उसके पास? मेरे से भी ज्यादा है वो तो उसका, खरीदते पता हैं नहीं। ना। हाँ वो खरीदता है वैसे। ये देखो इसका ये एबिलिटी है। Speed of light. और नहीं भाई, कहाँ छोड़ दिया उसने? उतरना पड़ेगा पहले हमें कहीं पे। भाई बहुत साल हो गए यार इसको नहीं खेला यार। बिल्ड करता हूँ इसको। बिल्ड तो ठीक ही लग रहे हैं। ठीक ही है, डैमेज ठीक ही होगा। तूने लंच किया? लंच किया है तुमने? हाँ। क्या बोलते हैं उसे? वो नहीं नहीं, वो मटर और सोयाबीन का सब्जी। फिर वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे? कटहल को क्या बोलते हैं तुम लोग? कटहल? कटहल को कटहल ही बोलते हैं। हाँ कटहल, हाँ शायद कटहल ही है भाई। मुझे कुछ और हो। कटहल का सीड का वो कटहल खा रहा था चटनी। क्या? नहीं नहीं। तो बीज वो चटनी। हाँ। पाउडर पाउडर लगता है मेरे को खाने में कटहल का वो सीड। हाँ वो ड्राई लगता है। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं। पर मम्मी और पापा बहुत खाते हैं। पापा बहुत खाते थे। मेरे को इतना खास नहीं लगता। सेम है मेरा भी। इसका आर्ट कैसा लगता है बताना तो, ये मैं इसका आर्ट करूंगा अभी। ये देखो इसका आर्ट, देखो कशिन का, देख रहे हो? पहले उतर जाते हैं एक्चुअली, खराब कर देगा शायद से ये आर्ट। अरे अच्छा है यार ये ट्रेन वाला फीचर, ट्रेन देते हैं। तुम भी बैठ सकते हो शायद मेरी ट्रेन में, बट तुम कम लेवल के हो ना। तो गिरा देगा क्या तुम मेरे को? हाँ धक्का मार दूंगा एक्चुअली नीचे। तेरे वर्ल्ड में कभी आया नहीं मैं, कैसे आऊँ? तो तुम्हें शेजनाया आना पड़ेगा, शेजनाया। रशिया आना पड़ेगा तुम्हें, रशिया। ये लिटरली रशिया है भाई। लोकेशन दिखा दे अपनी। सेंड लोकेशन। जस्ट सेंड लोकेशन। ये होगा तुम्हारा नॉर्थ क्राई का थोड़ा सा इधर। अरे बहुत दूर है भाई। तुम तो इधर नॉर्थ क्राई भी नहीं पहुंचे। दूर तो नहीं। ये देखो ये नॉर्थ हाँ। क्राई। ये देखो इधर से तुम्हें इधर, ये सुमेरु है ना। मैं इधर हूँ, डेजर्ट के पास हूँ मैं। हाँ डेजर्ट से तुम्हें ऐसे घुस के इधर आना पड़ेगा, इधर से ऐसे ऐसे आके इधर आना पड़ेगा, फिर आके इधर भाई। नहीं हो पाएगा, दूर तो नहीं हो पाएगा। उल्टा यहाँ पे वो यहाँ पे वो क्या क्या बोलो? क्या यहाँ पे क्या है? कोल्ड वाला मैकेनिक में तो वो का क्या है? क्या क्या कोल्ड का मैकेनिक है? क्या क्या क्या? अरे कुछ नहीं, वेव पॉइंट है मेरे ख्याल से उसका। पूछने वाला था वेव पॉइंट है क्या उधर? हाँ वो है। जो बिल्कुल। हाँ वो फिर तो आ जाऊंगा ना इवेंट के थ्रू। अच्छा हाँ। I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. ऑल्ट आ गया क्या तो? एक्शन का वहाँ पे पहुँचने देते हो डेस्टिनेशन में, शायद खराब कर देगा ये ट्रेन। अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊँ तो शायद नहीं करेगा। हाँ नहीं, लिटरली अंदर टेलीपोर्ट कर दिया मुझे भाई, क्या हुआ? पूजा भाई नहीं मुझे मुझे देखो फिजिक्स है भाई, फिजिक्स में होता है ना कि तुम मतलब पीछे जा, आगे पीछे जा रहे हो तो वो होता है कुछ। ओ नहीं प्लीज नहीं हो भाई। ट्रेन के बहुत फास्ट है क्या? नहीं भाई नहीं पकड़ पाऊंगा ट्रेन को।
कहाँ है मेरी ट्रेन? कहाँ गया मेरा ट्रेन? ये रहा। भाई मेरे ट्रेन छोड़ के ही चला जाता है मुझे। हाँ अभी अभी दिखा पाऊंगा शायद। ये मोहम्मद देख रहे हो? कहाँ दिख रहा है? 1 2 3 गो। With sword comes shadow. ओए ओए ओए, ये तो वो है। क्या है? क्या बोलते हैं अपना डांटे का भाई का नाम क्या था? वर्जिल जैसा है। हाँ वर्चुअल जैसे है ना। हाँ पहुंच गए हम लोग। कहाँ कहाँ पहुंचा है वैसे हमें? अबे हमें इधर आना था, कहाँ पहुंचा दिया इसने? अरे हट यार। In Russia, you go south. अरे हमें उधर जाना था यार, कहाँ लेके आ गया यार ये यार। कंडक्टर को डांटना पड़ेगा, कंडक्टर नहीं ड्राइवर को डांटना पड़ेगा भाई, गाली देना पड़ेगा ड्राइवर को। क्या चल रहा है भाई तू? ड्राइवर है भाई। ये है ड्राइवर भाई। कौन सी गली सुनेगा? यहाँ आना है भाई, यहाँ मैं कहाँ जाना है? अरे जगह का नाम क्या है? यहाँ आना है। ओ इतना लंबा है रास्ता। मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर पाऊंगा क्या यार? मुझे डायरेक्ट टेलीपोर्ट करने से अच्छा है नहीं कर सकता शायद। अरे क्यों भाई, इतना लंबा रास्ता। क्या कर रही है, क्या कर रही है तुम? फ्लाइट कैसे करते? क्या है ये? अच्छा। Don't blink. ऐसे जाके ऐसे जाएगा। अरे बहुत घूमना पड़ेगा यार। In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while तुम क्या कर रहे थे वैसे? एडवेंचरिंग कर रहा था। एडवेंचरिंग? रोबोट है क्या भाई? आर यू ह्यूमन आ रहा है? कहाँ? ओ ये I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. लिंक कर दे, रिवॉर्ड्स मिलेगा तेरे को। हाँ फर्स्ट टेकन 94। स्ट्रीम में नहीं करना चाहिए तेरे को, स्ट्रीम कर रहा है तो। तुम्हें पासवर्ड थोड़ी ना पता होगा यार। हाँ भाई मगर वही है ना। और तुम करोगे क्या? तुम वैसे भी गेंशिन नहीं खेलते क्या मेरे याद में? Come on, enough procrastinating. अच्छा हो गया। अपना बात नहीं कर रहा था। वहाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ ना मैं। फक भूल गया था।
होगा भाई मैंने वो तो नहीं बोला मैंने। कुछ होगा क्या अमन? डिलीट कर दूं मैं स्ट्रीम? पता नहीं वो तो पर्सनल ईमेल तो नहीं है ना, उससे तुम लगे पर्सनल कम करते हो। ये क्या आ गया? वही लोग पता नहीं ट्राई करते रहेंगे कुछ कुछ। अच्छा ये देते रहेंगे, हेलो हर्ष कैसे हो तुम। पर्सनल तो नहीं था ना, तू फेंक सकते हो उस ईमेल को ना। एक्चुअली मुझे लगा नहीं। Add Astra at पर्सनल बोल सकते हो एक तरह से, मैं अबे जगह में देख चुका हूँ। ठीक है छोड़, ये हो गया ना। डिलीट कर दूंगा ये स्ट्रीम। जॉब किलिंग गेम्स का कुछ हुआ क्या हाँ इनिशिएटिव? वो हाँ वो हुआ था ना, पता नहीं क्या हुआ। अपडेट फॉलो नहीं किया ना तुमने। हम्म, चल करते हैं फिर एक साथ। और बोलो तेरी वो रिएक्शन जानना था एक कोई थ्रिलर पे, कौन सा? रामायण जो था आने वाला है। ओह शिट भाई, क्या है क्या नाम है? सोचता है तू? क्या हुआ था? क्या हुआ ट्रेलर में? वही हम लोग तू एक आर्टिस्ट है ना, तो क्या सोचता है इसके बारे में? क्या हुआ ट्रेलर में वो तो बताओ। भाई देख 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 ले तभी तो जान पाऊंगा। क्या नाम है? रामायण। रामायण। रामायण है क्या? ट्रेलर मतलब क्या है, ये गेम है? हाँ गेम नहीं, अपना अपना मूवी है, आने वाला है। तो वीएफएक्स हाई है इसमें। और गेंशिन का अभी भी आ रहा है, मैं एक सेकंड पॉज करता हूँ गेंशिन। इतना अच्छा म्यूजिक है गेंशिन का। इंग्लिश क्यों है ये? ओ भाई इंग्लिश क्यों है? Your new इंग्लिश ही है क्या? एआई है क्या भाई? एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि मेरा चलता रहे पीछे। आवाज कम कर देता हूँ। म्यूजिक कम कर दे और क्या, ऑफ कोर्स। बाहर बना है क्या? इंडिया में नहीं बना? में बना है इस लग रहा है। कहाँ बना है? वीएफएक्स है ना, हाँ कहाँ बना स्टूडियो है? के अंदर ही बना है। स्टूडियो के अंदर ही बना है, बट क्या लाइक इंडियन फाउंडेड है या फिर? सब वीएफएक्स हाँ यूज किया, बाहर का यूज किया मेरे ख्याल से। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर मैं भी भूल गया, देख तो। स्टूडियो बाहर का नाम है क्या इधर? नीतीश तिवारी स्टूडियो का नाम है, देख तो। डी एन, इसको जानते हैं? डी एन जी कॉर्नेलो। वीएफएक्स में डी है नीचे। In adventuring as in 8 business. टाइम जीते हैं तो। and the netherworld shall have one ultimate ruler. Is a severe. My firstborn, Ram. I would gladly sacrifice my life अरे इसको क्यों रखा है यार? हाँ यार क्यों भाई, ये एक्टर क्यों है? for the welfare of the world. एक सेकंड पॉज कर दो। Waiting. Let's go. क्या हुआ? पॉज कर। हाँ क्यों, मतलब क्यों? पता नहीं यार, वो एक्टर थोड़ा अनसीरियस लगता है। हाँ वो भी है, थोड़ा सीरियस लगता है, मैच्योर नहीं लगता ना। हम्म। अरे राम किसी और को प्ले करना चाहिए था, पता नहीं वो राम जैसा फील नहीं होता ये बंदा। हाँ एग्जाम्पल।
पता नहीं यार कौन हो सकता है अच्छा राम, बट ये तो नहीं यार। अब क्या पुराना एक्टर सोचते हुए वो कैसा होगा, रणवीर कैसा होगा, रणवीर धुरंधर वाला। सिंह। हाँ रणवीर सिंह। पता नहीं, वो भी सीरियस लगते हैं मेरे को। हाँ हाँ। दोनों के एकदम सीरियस आदमी हो। It is my duty to uphold my father's word, Mother Kaikai. ये इंग्लिश क्यों बोल रहा है? 14 years of exile. 14 years of exile ने इसको इंग्लिश सिखा दिया होगा। Our fates are now of our way. गाने गा भी रहे क्या इंग्लिश में? On the day of our नहीं 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 ठीक है। we made vows to one another. Our fates are now forever. Not only will Ram's death be agonizing, 3 realms. अच्छा लग रहा है। हाँ 6 तारीख, 6 तारीख तो तेरा बर्थडे है बे। नहीं 6 को नहीं है मेरा ब्रो, तुम कैसे भूल गए ब्रो तुम? 14 को है। तुम भाई क्या फ्रेंड हो यार तुम भाई, बर्थडे भूल गए ब्रो। 14 को है तेरा। देखा गाइस भाई कैसे ऐसे फ्रेंड्स है भाई मेरे, मेरा बर्थडे याद नहीं मेरा। अरे मजाक कर रहा था, पता है। अरे वेट भाई कर रहा था, 14 को है। नहीं है 14 को यार, 14 को भी नहीं है भाई, तुम तो 2 बार गलत है भाई। कैसा कैसा घंटे 14 को नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं डेट कैसे बोल सकता हूँ, एक सेकंड बस। क्या, एक सेकंड? अरे याद था मेरे को। हाँ ठीक है याद करो। भाई कोई बात नहीं भाई, मुझे तुम्हारा बर्थडे भी नहीं पता भाई, कोई बात नहीं। लेटर वीक्स में था मेरे को जितना याद है, 22 23 करके था। नहीं 22 23 नहीं था यार। लेटर वीक्स में था तेरा बर्थडे, कैसे भूल गया? अब 20 पहुंचता ही नहीं है यार। 19 नहीं 19 तो नहीं हो सकता तेरा। अब मुझे स्ट्रीम में नहीं बोलना, छोड़ो बाद में बोलूंगा। अरे वो स्ट्रीम में नहीं बोलना, स्ट्रीम में नहीं, क्लोज बोलूंगा, क्लोज क्लोज है पर 17 के क्लोज। Speed of light. कहाँ है इसका वेव पॉइंट, कहाँ गया वेव पॉइंट? हेलो अमन, यस तुम्हारा बर्थडे कब है? अभी होने वाला है। मेरा है They weren't exaggerating. 33 It's a good thing from what 33 I'm कब? told. Most of the trapped December को। miners. Yeah. 33 You do December। that. Meet me back here as 33 दिसंबर। हाँ। तो तुम्हारा एंड ऑफ द ईयर टाइप का है वो, लेट है। क्या झूठ बोल रहे थे क्या? नहीं डाउनलोड होने वाला है मेरा गेंशिन भाई। अच्छा है। कैसे लगा? अच्छा मैं पूछने ही भूल गया, कैसे लगा तेरे को? भाई कार्टून ही लगा यार, सच बोलूं तो कार्टून ही लगा। वीएफएक्स अच्छा नहीं लगा सच बोलूं तो, मुझे कुछ कुछ पार्ट अच्छा लगा बट लाइक ओवरऑल नहीं भाई। जस्ट स्ट्रिक्टली वीएफएक्स बोल रहा हूँ, कहानी तो नहीं बोल सकता मैं। क्यों तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं अच्छा खासा बोलूंगा ना इसलिए। वाह वाह इंडिया डेवलप कर रहा है, वाह ऐसा बोलेगा मेरे को लगा था। स्टूडियो अच्छा, वो स्टूडियो इंडिया का है तो अच्छा है, मतलब लाइक अच्छा बना है। इंडिया का नहीं, एकेडमी अवार्ड जीता है ना, इंडिया का स्टूडियो जीता है कभी? इंडिया के लोग करते हैं तो लाइक बट फ्रीलांसिंग करते हैं हमारे इंडिया के लोग, लिटरली एनिमेशन या फिर जो भी है, इसलिए इंडिया का ऐसे नाम नहीं आता। बट लाइक है हमारे एनिमेटर्स और वो अच्छे हैं। हैं यूके के लोग हैं बंदे। अच्छा
यूकी के बंदे हैं लोग। I have to. Don't go any further. इन्हें ओडिसी में भी किया है काम। ओडिसी देखा अच्छा ये तुमने? तेरे को देखने It's too क्या था ना? dangerous here. हाँ नहीं There's देखा। a highly aggressive monster on the क्या क्या prowl. देखना है? जाएगा सब नोलन का I मूवी देखने see. के लिए। ओडिसी गंदा है क्या? था From वो Snezhnegrad. कुछ Well, ओडिसी गंदा क्यों है? good to meet you. अरे गंदा मेरे के लोगों को वो So पसंद नहीं है कि this ना वो कास्टिंग में वो She was हेलेन the और ट्रॉय first था ना member of the उसको काली Faterum. बंदी को There are बना दिया 5 था people. Let's go. Every second और counts. इसका वही यही था कुछ था एक नाम मैं भूल गया उसका। अरे एक था वो मतलब कि वो उसके एक कैरेक्टर था उसको वो लड़का था उसको लड़की वाला वही टाइप का दे दिया। अच्छा ट्रांसलेशन कराया था ना एक ने। मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ। हाँ किसी करते थे स्ट्रीम बंद? मैं वो सेंसिटिव बातें नहीं बोल रहा वही बोल रहा हूँ बस तो। रुको रुको बताओ बताओ बताओ। हेलो। अच्छा तो ये अच्छा क्या काले लोगों को प्ले नहीं करना चाहिए था? अच्छा जो भी इसका नाम है अच्छा और ये है क्या नाम क्या था उस लड़की का एक है वो ब्लैक वुमेन उसका नाम मैं भूल गया। उसको हेलेन और ट्रॉय बनाया है ऊपर से एक और एक एलिट पेश नाम बोल के वो पहले लड़की थी वो लड़का बन गया उसको एक रोल दिए वो लड़का का रोल था This must स्पार्टन be the आर्मी का। monster's shadow. Looks like a tough opponent. वो एग्जैक्टली क्या था मैं नाम भूल गया वो उसका ये रोल था जब ये जब वो लोग कहानी तो पता है ट्रॉय का कहानी पता है ना? नहीं। तो बेसिकली वो लोग एक घोड़ा है ना घोड़ा छोड़ के जाते हैं घोड़ा छूट के जाते हैं? ओपोनेंट मतलब हाँ हाँ मतलब वार्ड में और फाइट करते करते घोड़ा छोड़ के वो लोग वापस मतलब शिप लेके चले जाते हैं। असली में नहीं लिख जाते वो लोग ऐसे बस छुप जाते हैं तो उनका ओपोनेंट को लगता है कि ना इन लोग ने हार मान लिया है वो सब मान लिया है तो वही फिर ना वो लोग उनका घोड़ा लेके जाते हैं एक विक्ट्री का वो सिंबल की तरफ सिंबल की तरह ओ चोजन हॉर्स टाइप का। बाद में हाँ ट्रोजन हॉर्स वही है कहानी उसी का सेम टू सेम है वही है हाँ मतलब सेम टू सेम गया वही। अच्छा मैं मूवी का बात कर रहा था ब्लेड रनर 2049 देखा है तूने? ब्लेड रनर ने इसमें मतलब कि वो वही है अच्छा लगा मेरे को। मुझे ओडिसी की वजह मुझे क्यों देखना पड़ा ओडिसी? क्यों? सोचो क्यों? बट इसमें कुछ नहीं रखा है तो क्या क्यों देखना है? उसमें वो बड़े बड़े एसेट्स वाले उनको डाला है ना। देखा है वो लाइक वो कौन डाले किसको डाले? बड़े एसेट्स वाले लोगों को डाला है उधर। तूने कुछ और ही देख लिया होगा ओडिसी कुछ ओडिसी के नाम पे तूने कुछ और ही देख लिया होगा ऐसा ओडिसी में कुछ नहीं है। है तो कहाँ लिटरली है शायद। फोटो दिखा मेरे को तो फोटो दिखा। एक सेकंड। गलत चीज देख के आया तू ओडिसी नहीं देखा तूने। भाई लिटरली पोस्ट देखा था यार ओडिसी के बारे में। ये देखो तो स्ट्रीम बंद है। हाँ मैं बस वो करके रखा है ना। ओ अबे मीम है वो साले। मुझे असली है करके। Shit भाई। और ऐसा ऐसा प्रोपोर्शन का वो होना भाई ये बहुत रेयर होता है कि सर्जरी के थ्रू भी इतना मुश्किल होता है ये सब। मैं डिलीट कर रहा हूँ ये मैसेज। हाँ हाँ कर दे फेक है भाई वो। क्यों और वो भाई? होता ना असली में लोग ना ओ भाई हार्मफुल होता क्योंकि ऐसा प्रोपोर्शन बहुत रेयर होते हैं। Crystalline Adagio. How to death. डाउनलोड हो गया वेरीफाई होने में तो टाइम लग रहा है अभी। उन्होंने वो फीचर डाला है पता है एल्डन रिंग जैसा मैसेजेस छोड़ सकते हो गेंशिन में।
अच्छा तो स्ट्रीम बंद कर दिया कौन सा डिस्कॉर्ड स्ट्रीम का बात कर रहा है फिर वो बस उसका बात कर रहा है डिस्कॉर्ड स्ट्रीम। यूट्यूब वाला डिस्कॉर्ड ना तो वो कैसे देखूं यूट्यूब में देखूं क्या हाँ देख सकते हो। उसमें तो आवाज वो रीडन हो जाएगा वो बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो। ऑडियो तो तेरा बंद करना पड़ेगा मेरे को डिस्कॉर्ड का नहीं मतलब यूट्यूब का ऑडियो बंद कर दो, थोड़ा डिले होगा पर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। The monster seems very agitated. It could attack at any moment. Let's make the first move. Shadow me. Thunderclap! Pirouette. Literally 0 damage हुई है। Let's begin. Witness the snow swan's grace. क्या भाई लैग मार रहा है मेरा मेरा गेंशिन भाई। Thank you for saving us. We'd have been monster fodder other. Thank you. Thank you. You're welcome. You should be safe now. Follow. Thank you. I've searched the area. Pretty sure the monster made a tactical retreat. Yeah, but with us here, it won't be coming back anytime soon. It may be small, but don't be fooled. It's a ferocious beast. It's lucky we got here when we did. The trapped miners have been successfully evacuated. Miners? Time for us to leave. Oh my god. Wait, this place... What is that? I don't know. It's back? Yes, it has family. What is that? This way. Run! ओ भाई तू वो खेलेगा क्या वैसे क्या ये स्काईरिम खेलेगा क्या स्काईरिम खेलूंगा है ना भाई मैं बहुत आवाज स्पेंड किया इसमें तो खरीदा है क्या तुमने स्काईरिम कर दूंगा हाँ पायरेट किया था बचपन में खेला था ना Thanks. तो मजा आया था Let's get out of here. तो आई डोंट केयर फॉर प्रोग्राम उसको हाँ बोलो बोलो बड़ा नहीं है पेची इतना बड़ा नहीं है और उसका मॉडल भी नहीं है मतलब सब वो है तो मतलब गेम है थोड़ा स्टोरी का सेंस मतलब कि जो कैरेक्टर्स है ना तो उसका अच्छा लगता है मतलब इंटरेक्शन उनके साथ गेंशिन में डेड फीलिंग आता है तो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई तू क्या बोल रहा था बोल ये शॉर्ट फ्री में मिल रहा है हमें व्हाट फ्री में मिल रही है क्या अच्छा फ्री में क्यों मिल रहा है ये अच्छा नहीं होता नहीं क्रीट डैमेज इसे सबस्टेट दे रहे हो तो भाई खतरनाक है ये क्रीट अटैक क्रीट ये बहुत बहुत वैल्यूएबल हुआ है तो when traveler equips this their attack will be increased by 16% for 8 seconds after they hit an opponent. At the same time they will also gain 3 elemental energy. This effect can be triggered once every 5 seconds. This can be triggered even when the character is not on the field. Whoa, OP bhai. वो भी 5 स्टार दिया है उन्होंने वाओ वाओ हमें क्वेस्ट कंप्लीट करना है भाई उसके बाद ही ऊपर पाएंगे भाई क्या होगा ये टाइम एक टाइम के लिए दिया है बस शायद या फिर क्यों क्यों दिया ये
टेम्पररी। एक सवाल था, तेरे को चाइनीज गूनर गेम कैसे लगता है भाई? खेला ही नहीं है तो कैसे बता पाऊंगा मैं। मैंने भी नहीं खेला। मैं वो जो आता रहता है ना, चाइनीज गूनर गेम निकल के आता रहता है, वो कैसे लगता है देखते? जैसे कौन सा भाई, क्या क्या मुझे दिखाओ तो, मैंने शायद देखा भी नहीं है आज तक अबे कुछ। नाम तो मुझे भी नहीं पता ना। रैंडमली मैंने बहुत पॉपअप देखा है, चाइनीज गूनर गेम बहुत देखा है। उसमें मतलब कि एक चाइनीज लेडी होती है, Everyone's वो असली accounted होता है for. मतलब कि, We managed to rescue them हाँ all. You really held your और own फिर अपना today. गूनिंग सीरीज बनाती है, I मतलब कि hmm, पार्ट बाय पार्ट गेम don't होती think I've seen you. All right then. अच्छा। है। मैं डेटिंग सिम टाइप का है थोड़ा बहुत। Hello. जैसे I एक hear गेम the था ना rescue कुछ रूफ वाला, operation was a great success. गूनर गेम ही है यार, I क्या कर knew सकते हैं, what गूनर brings you गेम here, है। Odette. फाइव हार्ट्स No, अंडर of the रूफ में कुछ TUI करके था। mission. हाँ भूल I गया। ओ वो वियर्ड मीम टाइप का, वो देखा, वियर्ड है भाई वो सब। She hasn't introduced. If you ever hear people mention the two crowning jewels of the Korailyevsky troupe, they're ये लोग talking ये about ड्रामा देख के Odette शायद से and the उनको prima पसंद आएगा। donna, ये लोग नहीं देखते Vodianitsa. उनको awkward ही लगेगा भाई, क्या हो रहा है। ये ड्रामा वालों को भी अजीब ही लगेगा भाई। On top of that, Odette's नहीं, also उनको तो a समझ आएगा। rising मैं Fatui कोरियन star. सुनने में It's थोड़ा सा looking likely वो she'll नहीं होना inherit है, the title of क्या the बोलते हैं। Fair Lady. ये She कोरियन learned था ये all सब her जब सुनते हैं तो combat उनको skills कैसे from लगता है। Rosaline herself. Used to be one of her most valued subordinates, too. You flatter एलियन जैसे me, लगता है ना, Lady मतलब अलग सा Marionette. लैंग्वेज है थोड़ा। If she's Rosaline's protege, हेलो, that makes me. मैं कुछ सोच रहा था। Never नहीं mind. लगता क्या? There's no क्या? need to bring it up. No कोरियन ये point सब जो making things लैंग्वेज सुनते हैं awkward. तो। हाँ तो तो सिमिलर लगता है क्या ये सब लैंग्वेज? ये तो बहुत अलग सा लैंग्वेज है। आप अगर कोई लड़की बोल रहा हो तो सुंदर लगता है यार। सुंदर नहीं, अनफेमिलियर लैंग्वेज है ना, बहुत अनफेमिलियर लैंग्वेज है। तो सुनने में वो बहुत अजीब सा लगता है मेरे को। जैसे मैं जब पहली बार चाइनीज सुना था ना, तो मेरे को लगा भाई ये क्या चीज है। छू खा 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 ऐसे आ रहा Equally था। successful, even if the heavy snowfall summoned by ओ that भाई फिर monster. तो All मुश्किल right, हो रहा था मेरे now को that we're done here, कैचअप करना। it's time to get out जैपनीज of ऐसा this नहीं होता, blizzard. जैपनीज इजी लगा था। Sure, but पता नहीं क्यों। Snezhnograd will send someone to investigate and हाँ draw up a relief इस वक्त plan. नहीं होता कैसा, कुछ कुछ लैंग्वेज बहुत ज्यादा First, फॉरेन टाइप Biancolone का लगता needs है, to approve the एलियन budget. टाइप का। Then हाँ Pagini हाँ has to sign off हाँ। on the plan. That's the rough process अब भाई anyway. Could take वही तो anywhere बोल from रहा a हूँ मैं, couple of तो weeks उसको to a मतलब कि couple of इसमें months. देखने में मुश्किल लगता है Yep, कंटेंट, क्योंकि तो nothing बहुत we can ज्यादा do about अनफेमिलियर it. है There's a वो whole लैंग्वेज। stack of incident reports like पता this नहीं, on मुझे कभी ऐसा फील नहीं Wikipedia. हुआ तो पता नहीं। तो मुझे हुआ है बहुत बार, अच्छा। चाइनीज के साथ हुआ था स्पेशली। The snow has तो मैं eased पहली a बार सुना little भाई for ये now, कंटेंट में but कैसे देखूं यार, there's no telling when that will ऐसा हो गया change था with मेरा। that monster still at large. Fuel for heating is in short supply, अच्छा। and relief is weeks away. It just feels like there should be a better way. Hey, quit daydreaming. Let's get तो back मेरे को to भाई ये सब गेम Snezhnograd. खेलते समय और मुश्किल लगेगा भाई, ये कैसा लैंग्वेज है। तुम इंग्लिश में खेले ना? इंग्लिश I में भी है found क्या? it in a cave. It handles pretty nicely. इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला तो होगा शायद। You have a बदमाश strange आदमी। affinity for secondhand पर अभी तो swords. पूरा था ये सब, तो मैं देखते ही नहीं अभी नहीं, देख लिया। मैं बोल रहा हो सकता है शायद भाई, क्या हाँ भाई बोलूं। बना भाई, मैं मेरे को पता ही था। तू उसी एरिया का आदमी है। हम्म। हाँ भाई तू गूंडा है भाई, तू गूनिंग करता है। हाँ कर तो दिन भर रात भर, अभी कर ही रहा हूँ वैसे मैं खेलते हुए। की साले दोस्तों से बातें करते हुए गूनिंग कर रहे हैं। हाँ अलग ही मेरा हो फील है गया भाई। डाउनलोड। वेरीफाई करना पड़ेगा। की साले ऐसे कौन बोलता है? तुम्हारा इतना जल्दी कैसे हो जाता है डाउनलोड यार? तुम्हारा वाईफाई अच्छा है। थैंक यू। 100 MB वाला है क्या? 200 200। 200 MB वाला? अभी क्यों? भी क्या, मैं कभी झूठ बोलता कभी सही बोलता, पकड़ नहीं पाता ना तू। नहीं मैं भैया ने बोला था कि वो लेगा, बट उन्होंने बोला था 100 MB वाला ट्राई करेगा करके, 200 तो नहीं बोला था। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। नहीं सच बोलो, कितना कितना उसका कितना MB वाला है? बताओ भाई। 3 GB का और एक अपडेट है भाई, हट। नहीं तो बताओ तो कितना क्या कितना बोल जीबी रहा के, था? कितना कितना वो है तुम्हारा लाइक नेटवर्क ओ स्पीड? भाई तेरा, मेरा नेट वो हो रहा होगा शायद, टावर्स कट रहे हैं मेरे लिए।
नेटवर्क स्पीड कितने है तुम्हारे नेटवर्क स्पीड हाँ स्पीड कितना है तुम्हारा नेट का वो भाई आवाज कट रहे तेरा मेरे लिए वो अबे डाउन भाई कर रहा हूँ ना मैं अभी अरे यार झूठ क्यों बोलते हैं शायद मेरा भी Well, कट ही if रहा it था isn't लेकिन Counselor Tartaglia, और 3 GB Mr. Big Shot himself. 3 GB स्पीड वाला है तुम्हारा 898 Go easy on MB me. का Hey, है comrade. Good to see you too, Odette. It went fine. 0.04 ये जो अब भाई ये सच बोल रहा था How मैं about you? Any new developments? Not really. 40 MBPS वाला है तुम्हारा That's not good news. Yeah. Obviously, if push comes to shove, क्या there are ways to स्पीड crack अरे down वो on तो आवाज dissent. कट रहा है हम लोग का मिसकम्युनिकेशन हो रहा है इस पे कुछ और सा होगा है भाई मैं उसका बात कर रहा था वो नया डाउनलोड अच्छा Sorry, फाइल I है have अभी to ask genshin का something. Huh? Of course. It sounds to me like, but what exactly स्पीड is तो this इतना नहीं है project's मेरा purpose? 2 MBPS है Where she's coming from. भाई If I could, I'd take your side right now. कितना लेते हैं तुम लोग 2000 रुपए Still, I have a. I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right 1000 now. चाहिए एक महीने Oh, का है and for what it's worth, 1000 I'm from 1000 Arepasok Oh. myself. The Tsaritsa wants to create a better, safer इसमें future क्या for the वो people भाई of को ट्राई करना Snezhnaya. था कि वो But स्पीड she's कैसा thinking है long वो term. कहते हैं ना I don't PUBG doubt that चलता है from इसको where you're कॉम्पिटिटिव standing, चाहिए Project Stuja seems to be 200 MBPS ज्यादा ही है भाई issues for everyone. But considering the अरे कोई Tsaritsa's स्पीड में कुछ vision for फर्क the नहीं पड़ता लग future, रहा थोड़ा सा these हाई are है इतना sacrifices worth making. लग रहा है इतना भी Sounds हाई like नहीं कि maybe मजा आ रहा है Sandrone and I can't oppose Project Stuja outright, but we're constantly सीरियसली raising our बताए concerns मेरे in को Vecha मतलब कम meetings. से कम 10 जीबी अगर 5 And मिनट में even हो though रहा है we तो अच्छा can't put लगता an end to it, there are plenty of other. I respect Her Majesty the Tsaritsa and trust her decisions. But at the end of the day, I'm still just a normal guy who cares deeply about my homeland. There's no way I would ever abandon them. As contentious as क्योंकि things क्योंकि can जब get पहली बार within the 5G Vetcha, इस्तेमाल किया था there's मैं no चौंक गया था भाई selfishness or malice वो भाई behind 10 it. MBPS Everyone होता है wants क्या to ऐसा get through करके this period as smooth. The अच्छा issue is that there's no way मुझे मुझे पता everyone under the है मुझे लगता है 5G वो है लाइक काम का नहीं है time. We're trying to decide on the lesser of two evils. But that is not the same thing as being blindly loyal to हैं the Tsaritsa. हेलो अमन No one's got their head in the sand here. We're all well aware of the way things are. In fairness to Sandrone, she rushed to ओए Sviatlo-Laidovka's हाँ aid and even ई Tartaglia, स्पोर्ट्स चल रहा है मैंने सुना who चेस used का to only care about the thrill of the तो fight, क्या करेंगे हम is लोग clearly doing his best to rise to the demands of his new फॉलो कर role रहे as तुम counselor. नहीं Hey, come फॉलो on. कर रहे There's only नहीं so कर रहा much नहीं we कर can रहा say, so don't press us too hard. मैं सोचा Look, वो I know जो how वर्ल्ड चैंपियन untenable है ना the इंडिया का Tsaritsa's position looks if you हाँ don't क्या understand her बाहर से motives. किसी ने खरीद लिया उसको बाहर का टीम ने अच्छा है Maybe you've heard already, but she's currently leading her army on a campaign to the east to defeat the monster that's been causing these brutal blizzards. बंदे को अच्छा पैसा मिलेगा मैं श्योर नहीं हूँ Been a मैंने गलत सुना है significant step शायद in मैंने dealing with the आदमी से present सुना है energy crisis. मैंने खुद वो नहीं पढ़ा अरे उसको ई स्पोर्ट वाले कंपनी ने खरीदा होगा ना लेकिन मैं श्योर नहीं As ई स्पोर्ट कंपनी ने खरीदा होगा Lisa उसको realizing her lifelong ambitions, she's still हाँ putting वही time and energy. To me, अच्छा भाई भाई कितना पैसा देता है भाई फाल्कन्स ये लिक्विड in the grand scheme of things, बहुत पैसा देता है why would भाई she waste? प्लेयर्स को अच्छा ये वो यहाँ का किसी स्पोर्ट्स वाले टीम में नहीं है यहाँ के लोग को बहुत कम पे करेगा Already done more than enough diplomacy for one day. I still think this our two fraud भी harbingers have करेगा made their positions very. I फ्रॉड think का it's a पता very नहीं valuable quality to be बट willing. यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलेगा ना मैंने सुना मैं एपेक्स का बता रहा था एपेक्स का मैं कहानी सुना है तो फ्रॉड होता है थोड़ा बहुत मैंने सुना एपेक्स में सुन रहा था ठीक है तो एपेक्स में बोलता है भाई ये नॉर्थ अमेरिका वाले को एटलीस्ट 5K सैलरी मिलती है 5K से ज्यादा लाइक वो मंथली सोचो तो क्या 5 बोलते हैं हाँ क्या 5K $5,000 से ज्यादा सैलरी मिलती ये है डॉलर हाँ $5,000
से ज्यादा मिलते हैं। अबे इधर आवाज कट रहा है यार। हेलो। वो तो लिख दे यार, तो आवाज कट रहा है। हाँ तो आवाज कट रहा है, लिख दे तू। तो स्ट्रीम लोड ले रहा होगा। हेलो। हेलो। अरे अभी हाँ भाई वो लिख दे यार। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी ठीक से है घर को। ये क्या बंद करूँ, ये बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो वो नॉर्थ अमेरिका वालों को भाई बहुत पैसा मिलता है यार, स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उन लोगों को जो मिनिमम मिलता है भाई, वो लाइक Oh, I'm sorry. बहुत ज़्यादा मिलता है, मिनिमम सैलरी है उनको। They're so. It's fine. So. तुझे कितना मिलता है? मुझे मुझे कुछ नहीं मिलता यार। तू तो नहीं खेलता क्या एपेक्स लीजेंड? किसका किसका टीम से खेलता है? भाई आवाज कट रहा होता है, मैं आवाज कट रहा होता है, मैं इसलिए बातें भी नहीं कर पा रहा, ऐसे बकवास कर रहा हूँ। बहुत आवाज कट रहे थे, समझ नहीं आ रहा मुझे। Well, that would क्यों be. कट रहा है बस? Hey, don't mention it. I'm sure you have things to do. Hopefully this takes a load off your mind. जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना, वो भी हो सकता है। हेलो। हेलो। ठीक ही तो है बस। हाँ मेरी तरफ से ठीक ही है, तुम्हारा डाउनलोडिंग का कुछ होगा यार, मैं चेक किया अभी अभी। यस यस, मिला ही हो रहा है। तुम्हारा भी आवाज कटना चाहिए था, तुम्हारा आवाज तो नहीं कट रहा। Already? That was. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone south. I assumed he'd been in Glupov this whole time. Well, I guess I'd better go sort out Paimon's security situation. I have some other work to catch up on at Glupov anyway. Okay, auto में नहीं होता तो प्रॉब्लम है तो। Me too. I have an incident report to write up. Let's leave it there for now. I guess everyone's in a difficult position. But Tartaglia's right. I have things to do. Things I want to do, and things I ought to do. To start with, I should go ask Alosha if he knows of any way to help Sviatlalaidovka. गेंशिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा यार, क्या हो गया? हेलो अमन। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा, मेरा वो गेंशिन, पता नहीं क्यों। It's 50-60% यूटिलाइज कर रहे, क्यों भाई? शेडर वो करने से होता है क्या, लाइक कम एफपीएस है? अमन हेलो। हेलो। ध्यान नहीं दिया, बोल दो। वो शेडर कैश वो होता है ना, शेडर कैश या फिर कुछ होता है ना, टेक्सचर लोड करने से मतलब वो परफॉर्मेंस कम हो जाता है क्या? क्या कम हो जाता है शेडर से? क्या शेडर कैश से? मतलब वो टेक्सचर वो करने से। बाद में बातें करते रुक, मैं डाउन होने दे। अच्छा हाँ, अगर तू हाई कर देगा तो क्या वही ग्राफिक्स हाई करेगा तो परफॉर्मेंस डाउन तो हो गई, एफपीएस ड्रॉप तो हो गई। मतलब ये बात पूछ रहा था ना। हाँ हाँ बाद में बातें करते हैं भाई, पास कट रहे हैं, क्या बातें करते हैं? तो वुदरिंग वेव्स खेलेगा क्या? देखता हूँ यार। एक हॉरर गेम है जो कोऑप खेल सकते हैं भाई। एक खेल हम लोग डबल शूटर खेलते रहते हैं। हाँ
कंप्लीट करने गया या फिर ये वाला एक था कुछ भूल गया मैं भी नाम। मगर उसमें तो एंगेजिंग होगा, मतलब अभी तो सोलो खेल रहे हैं, मैं ऐसे फील आ रहा है। अच्छा तो सोलो ही खेल रहे हैं। हाँ अरे गेम को रिस्टार्ट करता हूँ क्या मतलब ठीक हो जाए। अरे डिमांडिंग गेम तो नहीं है गेंशिन, क्यों हो रहा है फिर? कितना बाकी है तुम्हारा गेंशिन डाउनलोड होने में? Ah, fudge.
मैं आता हूँ, हो गया मेरा गेंशिन। ये कैसे होता है भाई? ये करके दिखाओ। यहाँ पे एक तो गर्मी है भाई। रेडिट में, मैं क्या हाँ बोल रहा था? रेडिट में किसी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा हो, लाइक बंदे का। ये कैसे इसका जॉ कैसे इतना शार्प हो गया यार? सर्जरी की है क्या? मैंने किया था तुमसे जो शॉट। फिल्टर मैं लगा क्या? तेरा भी कर सकता हूँ। उसको तो वो करना पड़ेगा, ये क्या? ज्यादा ही शार्प लग रहा था उसका जॉ। एक सेकेंड। तेरे वर्ल्ड में कैसे आऊँ मैं? नहीं आ पाओगे तुम, मेरा लेवल बहुत हाई है। फिर भी देखो तो फ्रेंड्स में जाके मुझे, रुको मैं, नहीं तुम ही कर पाओगे। तुम मुझे फ्रेंड्स, में क्या तू? हाँ फ्रेंड्स में जाके राइडन शॉट देखो। नहीं कर सकता थे बोला तो। हाँ नहीं कर सकता मैं। ये तूने बोला था इसमें मिनी गेम्स है, वो सब ट्राई करना था। करो यस। अभी क्या कर पाओगे तुम? टीसीजी अनलॉक किया क्या तुमने? टीसीजी Don't worry. Snowfall on this scale is no impediment. We can keep वो क्या moving. चीज है भाई? कार्ड गेम, कार्ड गेम। नहीं किया मैंने। गेंशिन के अंदर लिटरली उन्होंने एक अलग सा कार्ड गेम बना के रखा है, और अच्छा भी है वो कार्ड गेम। और खेला है 300 प्राइमोजन मिला मेरे को। ओ पुल करो यार। क्या पुल करूं? पैंट्स। रुको रुको रुको, नहीं नहीं स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर। एक सेकंड, कैसे करते हैं स्क्रीन शेयर? हाँ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अच्छा है मेरे स्ट्रीम का कंटेंट मेरा भी गेंशिन, मैं गेंशिन नहीं शेयर नहीं होगा। होगा तो इंटायर स्क्रीन करो, इंटायर स्क्रीन होने से हो जाएगा। एंटायर स्क्रीन करने से सब दिखेगा तेरे को। हाँ तो क्या हो गया उसमें? भाई मेरे को उसको टैब खोल के रखा है। एक सेकंड बंद करता हूँ। हाँ। क्या क्या फल करेगा भाई? हाँ चल करता हूँ। अरे मतलब, अरे यहाँ पे दिखेगा क्या ये? मैं कुछ, हाँ दिखेगा तो। नहीं दिखेगा। नहीं कर बस आगे। नहीं कर, अरे नहीं होगा यार पे। दूसरा दूसरा डिश बंद कर लो ना, बस सब बंद कर लो, बस गेंशिन खोल के रखो। नहीं वो उसका ही बात कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड का ही बात कर रहा हूँ। तो डिस्कॉर्ड में क्या दिखेगा? किसी किसी ग्रुप्स में होगा, यहाँ पे आदमी को होना नहीं चाहिए। आज दूसरा डिस्प्ले में ले जाओ अपना डिस्कॉर्ड यार, दूसरा डिस्प्ले है ना। नहीं है, मैं बस एक ही डिस्प्ले। अच्छा ठीक है, मैंने अपना वो बंद किया है, ब्राउजर बंद कर लिया, अभी कर लो। अब स्ट्रीम में नहीं दिखेगा, अभी खोल लो गेंशिन, इसके बाद वो कर लूँगा। ओके ओके ठीक है। अच्छा गेंशिन खोल लो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ऊपर ऊपर एकदम ऊपर। हाँ नॉर्थ, हाँ अर्लेचिनो, अर्लेचिनो टाइम। क्या खरीदना पड़ता है? नहीं खरीदने से भी होगा, वो डायरेक्ट करने ही देगा तुम्हें, फिर भी खरीद लो। हाँ ये यही है, हाँ इसको खरीदो। ये ना, हाँ 4 ही खरीद सकता हूँ। हट, हाँ कोई बात नहीं, बहुत है कोई 4 भाई। अर्लिचिनो टैम बेबी। हाँ नहीं मिला तो क्या करूँ भाई? क्या कर सकते हो? करो करो करो, फुल करो। ए भगवान, तो अच्छा लग रहा था मेरे को। ये क्या तगड़ मिल गया? कर करते रहो करते रहो करते रहो। 4 है। क्या होगा भाई? हो गया, नहीं मिलेगा। करते रहो, अरे कैंसिल करके करते रहो। तेरा लक मिल गया मेरे को। ये नहीं मिला भाई,
एक बाकी करो करो होगा नहीं मिलेगा। और भी कर पाओगे तो शॉप में जाओ, शॉप में और कर पाओगे। हाँ शॉप में क्या ही है? पूरी बनाओ पूरी। एक कर पाऊंगा बस। हाँ करो रुको वो सेकंड वाला इसमें जाओ तो फर्स्ट वाला एकदम फर्स्ट जो है शॉप में। नहीं ये नहीं अरे शॉप में ये नहीं वही वाला पाइमोन्स बार्गेन में जाओ, पाइमोन्स बार्गेन। आइए इसमें खरीदने की कोशिश करो तो ये एंटरटेनमेंट। हाँ नहीं कर सकता ना, मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है करो वरना एक बार वो ट्रायल कर लो, ट्रायल में भी तो शायद मिलेगा तुम्हें कूल। फोर स्टार। I'm Sucrose, a researcher of alchemy. अच्छा है सुक्रोस। I've been to a lot of places. 5 स्टार नहीं मिला, 4 स्टार मिला। सुक्रोस कैसे है? अच्छा है। हाँ इसमें पोल है तुम्हारे पास, एक करो ना। अरे स्टैंडर्ड में है तुम्हारा एक पोल, खोलो। अरे अच्छा कैरेक्टर भी है इसमें। हाँ ये पुल करो, इसमें पुल करो। हाँ कुछ नहीं मिला, ठीक है। तुमने क्वेस्ट कंप्लीट किया है ना? लाइक उसमें क्वेस्ट कंप्लीट करने से भी मिलता है। एक बार वो खोलो हैंडबुक अपना, एडवेंचर हैंडबुक। ये नहीं उसमें इसमें भी दे रहा था वैसे। ये कौन है? ये रहा। नहीं ये नहीं एकदम लास्ट में। नहीं यही है। हाँ इसमें कुछ वो है, क्लेम कर लो। नहीं किया तुमने कोई भी क्वेस्ट कंप्लीट यार। ठीक है ये। हाँ ये मिलेगा, तुम ये क्वेस्ट कंप्लीट करो तो ये ऊपर में जो है ना वो मिलेगा तुम्हें। क्वेस्ट क्या है? हाँ इसको दो। हाँ चाहिए रैंक की नहीं मेरे को। कितना चाहिए तुम्हें? और थोड़ा चाहिए होगा। एक बार वो खोलो तो वो क्या बोलते हैं उसे, तुम्हारे पास इवेंट्स क्या है देखो जरा, क्या पता कर पाओ। हाँ एनिमल वालेंस पे हाँ कंपस हाँ ये जाते रहो नीचे। हाँ वो क्या था रुको ऊपर जाओ और ऊपर इसका ऊपर। ये क्या है? ओ नहीं ये तो वो है। अच्छा ठीक है नीचे जाओ। मुझे लगा तुम कैरेक्टर दे रहे हैं फिर मैं करता हूँ। ये करना फिर पहले नीचे जाओ तो नीचे। नहीं हाँ और नीचे। मतलब कुछ वो है, कोऑप वाला इवेंट है वो। मुझे लगा था कि हम लोग एक साथ कर पाएंगे। एक साथ कर पाने से तुम्हें मुझे ला देता थोड़ा। इसका आर्ट कुछ इतना डैमेज नहीं करता, वो है इसका। हाँ ब्लड नहीं वो ब्लड बॉन्ड मैकेनिक है। क्या बोलते हैं इसे, ब्लड बॉन्डेज करके एक मैकेनिक है, वो यूज करते हैं। आल्ट मत करो इसका, आल्ट से तुम्हारा डैमेज कम हो जाता है। आल्ट मत करो, आल्ट बस हील के लिए उसका आल्ट का भी कुछ काम है पर उसके लिए नहीं, सपोर्टिव काम है इसका। अभी वो आर्लेचिनो लो, वो करेगा। इसका और आर्लेचिनो का वो मिक्स कर दो। आर्लेचिनो में जाओ। हाँ एक साथ इसका। हाँ नाइस मतलब ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ना, इसको वेपराइज बोलते हैं। पानी और फायर को जब मिलाते हैं तो वो रिएक्शन कर रहे हो तुम। आर्ट यूज मत करो। आर्ट यूज करने से इसका एक वो मैकेनिक है, वो चला जाता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, रुको।
leave you a verse. Rain outlines your fate. Swirl, Mark 2. Animo Test 63 away. Transfixed. Everybody stand back. ई करो, ई करने के बाद भी आता है। ई है ही नहीं तुम्हारे पास। हमारा स्पाइरल अबिस खुला है क्या? हाँ क्या खुले? स्पाइरल अबिस वो क्या होता है? इवेंट्स में क्या पता कर पाओ। स्पाइरल अबिस करने से बहुत प्रीमोजियम्स मिलते हैं। लिटरली 10 फुल मिलेगा पहले। ऊपर वो जहाँ पे शंगलिंग करके कैरेक्टर था ना। हेलो आई एम शंगलिंग करके। नहीं नीचे और नीचे। हाँ ये रहा। My name is Shang. हाँ वेट करना पड़ेगा यार। कब तक वो है कुछ नहीं है। वो शिप को इधर पानी का। वो एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट है। वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। ढूंढ पाओगे? मैं नहीं बताने वाला। हाँ ऐसे मैप में ढूंढते रहना, मिल जाएगा। तो एक पजल करना पड़ेगा। वो पजल करने से तुम्हें वो खुल जाएगा। हाँ इधर ही कहीं पे होगा। यहाँ पे Sweet dreams. Don't blink. Justice will prevail. Quiver. Speed of light. Cut to the chase. Rise with the sun. ठीक है। Strike. Incoming. एक सेकंड। Dodge this. हाँ यहीं पे होगा। ऊपर आसमान में क्या है वो? हाँ आसमान में। हाँ वही है। ऊपर जाने के लिए कुछ वो करना पड़ेगा तुम्हें। पजल करना पड़ेगा। सुपर कंडक्ट। This moment will be frozen in time. Freeze. Turn that frown upside down. Cool it. मैं क्या करना पड़ेगा इधर? नहीं ये इधर कुछ पजल होगा। घूमते रहो तो इधर उधर। ये तोड़ना नहीं है क्या? हाँ शायद, क्या पता। तो साइड वाला नहीं है क्या? Leave it to me. वो नहीं है शायद। वो तोड़ने वाला पजल नहीं है, कुछ और पजल है। वो हाँ तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा। सीली ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। सीली को ढूंढो। वो नीला कुछ होता है ना, घोष टाइप का, उनको ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। मुझे वो ढूंढ के इधर लाना पड़ेगा। देखो तो कहीं आगे पीछे होगा कहीं पे। Speed of light. Drop your weapons. Light it up. From the sky. Not so hard.
Not so hard. ये हाँ 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 लेके जाओ उसको फॉलो करो. वही जल गया तो अभी लैग में रख मारते हैं चला गया ना गर्मी है भी हाँ गर्मी. क्या बैटरी में खेल रहे हो क्या तुम? हाँ हाँ वो तो बंद कर लो ये. चला गया तो बोला तो वो क्या बोलते हैं स्ट्रीम बंद कर दो. डिस्कॉर्ड स्ट्रीम. हाँ तो वो भी मैं नहीं देख रहा डिस्कॉर्ड स्ट्रीम. इतना भी वर्क है हेलो म्यूट भी हो गए भाई. Hello, Amon. Rise with the sun! Flash! Don't blink! Speed of light! Hey! यार डैमेज नहीं करता भाई इस टीम में. The threads of your fate lie in my hands. I knew you'd miss me. Yay! Playtime! तो भाई लिटरली स्नोबॉल भाई. कितना दूर जा सकता है ऐसे भाई? Shit. मैं चलता हूँ.